हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू से सॉरी इन जर्मन। अलग अलग तरीके से कैसे सॉरी बोलते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिनेरियो में हाउ टू से सॉरी, हाउ टू से आई अपॉलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्लेसेस पे हम जाते हैं, कभी स्ट्रीट में हम जाते हैं, कभी क्लासरूम में हम होते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी हम अपना रिग्रेट फील करते हैं समथिंग दैट वी हैव डन रॉन्ग। सो हाउ टू से दीज ऑल वर्ड्स, ऑल दीज सेंटेंसेस इन जर्मन। सो लेट्स स्टार्ट। Entschuldigung, Entschuldigung means excuse me। बहुत इनफॉर्मल है, वेरी कैजुअल वर्ड। सपोज आप स्ट्रीट पे जा रहे हो, थोड़ा हिट हो गया, Entschuldigung, आई एम सॉरी। Entschuldigung, बस स्टॉप पे हो, किससे पूछ रहे हो आप, Entschuldigung, कैन यू प्लीज टेल मी। शॉप के पास हो आप, शॉपकीपर से आप बात कर रहे हो, Entschuldigung, हाउ मच इट कॉस्ट। Entschuldigung, कैन यू प्लीज हेल्प मी। सो Entschuldigung, very very informal casual way। Entschuldigung, formal way, Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie bitte। You are talking to a teacher, professor, or in a formal talk in the office, अपने colleague से आप बात कर रहे हो, Entschuldigen Sie bitte, Entschuldigen Sie bitte, can you please help me, Entschuldigen Sie bitte, I have a problem। So like this। Another informal way, es tut mir leid, es tut mir sehr leid, I'm extremely sorry, es tut mir wirklich sehr leid, I'm extremely very sorry। It's formal, more polite। Or you can also say tut mir leid, tut mir leid, or das tut mir leid, das tut mir leid, I'm sorry। आप बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हो, कोई आपने बहुत मिस्टेक कर दी है, ओ es tut mir wirklich sehr leid, I'm extremely sorry for this, es tut mir wirklich sehr leid, I'm extremely sorry for this। Verzeihung bitte, Verzeihung bitte, this is another way of saying sorry। Verzeihen Sie, bitte verzeihen Sie mir, please excuse me। Another way of saying sorry in a very formal way, ich bitte Sie die Verzeihung, ich bitte Sie die Verzeihung, I request you, I request you to apology me, I request you to excuse me, ich bitte Sie die Verzeihung, I request you to excuse me, es tut mir sehr leid, ich habe das gemacht, I'm extremely sorry that I have done this। Ich habe mir nicht gemeint, ich habe mir das nicht gemeint, I didn't mean that, I didn't mean that। आपने फ्रेंड्स के साथ कोई जोक क्रैक किया, ही डजंट लाइक, ओह ich habe das nicht gemeint, I didn't mean that, मेरा ये मतलब नहीं था। आपसे कोई मिस्टेक होगी तो आप अपने बॉस को, अपने सीनियर्स को, टीचर्स को अपॉलॉजी बोलना है कि दैट यू विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन। Ich sorge dafür, dass es den Fehler nicht wieder begehe und mache। Ich sorge dafür, dass ich den Fehler nicht wieder begehe। I take care that I will not make this mistake again। Fehler begehen और Fehler machen, both you can use, interchangeable। Fehler के साथ machen भी यूज कर सकते हो आप, और begehen भी। Ich sorge dafür, I take care in future that I will not repeat the same mistake। Ich sorge dafür। Fehler means mistake। इसके अलावा कुछ जैसे कुछ फ्रेंड ने बोला किसी ने and you didn't get it, so in English में हम बोलते हैं pardon, can you repeat please। in German there is a word very formal, wie bitte, wie bitte, I didn't get you, wie bitte, I didn't get you, can you please repeat। और among friends, friends के साथ आप हो तो you can say something, it's very casual, was क्या क्या, मेरे को नहीं समझ आया, can you repeat, was। but informally we don't say like this, we say generally wie bitte, ich habe das nicht verstanden, wie bitte, das habe ich nicht verstanden, wie bitte, pardon, excuse me, I have not understood this, can you please repeat, I didn't get it, what you mean, can you please repeat। so this is the way of saying when you didn't get something। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो फ्रेंड्स के साथ कैसे बोलना है और फॉर्मली कैसे बोलना है। सो आज के वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो था बट वेरी इंफॉर्मेटिव। कीप वॉचिंग जर्मन क्लास।
Do like and subscribe the channel and share it as much as possible. See you next time with a new video. Bye bye. Take care.